Hello, very good morning to all. Sir, where we can get the PPT? I already shared the PPT. Okay. Hello, a very good morning to all. Some network issues are there. So I'll start the class now, है ना? Yes, sir. My screen is visible to all of you. Just confirm कर दो एक बार. Yes, is it visible? चलो. Yes, sir. So in yesterday class, हमने क्या किया था? Basically, we are done with the D block elements and P block, right? So now, in starting 10 to 15 minutes, we are trying to solve questions. ठीक है, हम questions solve करेंगे.
डी और पी ब्लॉक पे, ओके। एंड उसके बाद हम फिर आज जीओसी का जो क्रैश कोर्स है उसको कवर करने वाले। सो इनिशियली 10-15 मिनट्स वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू डी एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज कल की क्लास में हमने पूरा क्लास में ओनली वी आर कवर द बेसिक concept, we are not able to solve questions related to D and P block. So in this we are going to start with the first solve questions, right? तो पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डी और पी ब्लॉक से, क्या क्या क्वेश्चंस थे, फिर धीरे धीरे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। चलो, सो एवरीवन, सभी लोग ध्यान से बताना, कहीं कोई भी डाउट हो यू कैन आस्क, ओके। द फर्स्ट क्वेश्चन इज identify the incorrect statement from the following. So you have to identify the incorrect statement. This question is from the p block elements. So everyone try. Acidic strength of HX, that is HF is greater than HCl is greater than HBr and HI. Is this correct order? Or the second option is the fluorine exhibit -1 oxidation state, whereas the other halogen exhibit +1, +3, +5, and +7 oxidation state as well. The enthalpy dissociation of F2 is smaller than that of Cl2, and the fluorine is the strong oxidizing agent. So which of the following statement is incorrect, beta? Fatafat, everyone. Everyone try to solve. Out of the given four option, which option is incorrect? Yes. Sai Charan was saying option C. Okay. Beta, the enthalpy dissociation of F2 ena is smaller. Yes, we know that यहाँ पे exception है. But the fact is, due to the small size of fluorine, very high repulsions are there, right? So due to the small size of fluorine and presence of 9 electrons, the repulsion is very much. So due to more repulsion, their enthalpy of dissociation is less. So option C is absolutely correct, right? Shruti was saying option B. No, better. Fluorine is the most electronegative element and it shows only one oxidation state, that is -1. Rest of the other element like chlorine, bromine, iodine, they will show +1, +3 when they combine with the more electronegative atom like oxygen and all these things. So option B is also correct. Now, Saichir is saying option A. Yes, this option is correct because we all know the acidic strength is HI. HI is more acidic than HBr, than HCl, than HF. So HF is the least acidic, right? So option A is absolutely correct, right? So option A correct है because in this they are asking the incorrect options now. So option A जो है वो incorrect रखा है. Is this clear to everyone? Yes. Is this clear to everyone? Tell me fast. Chalo, move to the next question. In this, we have to match list one, list two. So, effluence of colorless gas, gas with the smell of rotten egg, gas with the pungent smell, and brown fumes. So, brown fumes तो आपने सुना ही होगा, बहुत सिंपल है ये brown fumes है ना. So, tell me होना चाहिए. एक बार आप ट्राई करो, फिर I'm going to tell you. देखो, ब्राउन फ्यूम्स तो हम सबको पता है ना, ब्राउन फ्यूम्स किसका होता है, दैट इज ब्राउन फ्यूम्स फॉर NO2 ओनली. हम्म. ब्राउन फ्यूम्स फॉर NO2. बताओ अब जल्दी. सर ऑप्शन बी. ओके. बी बेटा. बी का तो वन है. ए और बी, आइदर ए और बी होगा, है ना. अभी चेक करते हैं. सर डी. डी नहीं होता तो शशांक, डी नहीं हो सकता. बिकॉज वी नो ना ब्राउन फ्यूम्स फॉर NO2 ओनली, है ना, NO2 नेगेटिव ओनली. सो यू कांट से ब्राउन फ्यूम फॉर SO2, राइट. सो दिस इज द वेरी कंफर्म पार्ट कि brown fumes are formed only for the NO2. So which option is correct? Now this is also, you know, rotten egg smell, right? Rotten egg smell. So in which case you get the rotten egg smell? Anyone tell? Rotten egg smell. That is sulfide. Sulfide.
Yes. So in case of sulfide, very good. So rotan, gas with the smell of rotan egg. तो correct option is B का तो हो जाएगा third. So B का third, D का one. Now what about A? Effurvence of colorless gas. Effurvence of colorless gas. Sulfide gas. Deepu was saying A. Very good. So बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं A is the correct option. Answer absolutely correct बेटा. Because दो कार हमारा गैस होता है that is a effurvence of colorless gas. So we all know this thing कि this is in case of CO2. तो CO2 की गैस में ये क्राइटेरिया होता है. इफरवेंस होता है, बुलबुला बनता है एंड द कलरलेस गैस. एंड CO2 कहाँ से मिलेगा? दैट इज कार्बोनेट ओर से. सो द ए का तो टू होगा. सो ए का हमारा टू, बी का हमारा थर्ड. ठीक है. एंड सी का हो गया फोर्थ. गैस विद द पंजेंट स्मेल SO3 एंड डी ब्राउन फ्यूम्स NO2. सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. समझ आएगा सबको? एक बार कंफर्म करो. डन. यस. चलो गुड. नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा. The next question is, among group 16 element, which one does not show -2 oxidation state? Out of the given group 16 element, oxygen, U, S, Se, TEPO, right? This is how we can remember now. U, S, Se, TEPO. So they are saying कि out of the given 16 group element, which one does not show -2 oxidation state? कौन यहाँ पे -2 oxidation state show नहीं करता है? This thing you need to tell. Tell me. D. Deepo saying D. That is PO. Anyone else? Phosphorus. बेटा phosphorus तो है ही नहीं इसमें. This is group 16 ना. या दिस इज ग्रुप 16 एलिमेंट ना. सो दिस इज ऑक्सीजन है, सेलेनियम है, टेलेरियम है, पोलोनियम है. सो वी कैन से दैट कि इनमें से तो नहीं करेगा. सो जो पोलोनियम है, पोलोनियम बिकॉज दीज लाई डाउन द ग्रुप, राइट. सो जनरली दीज एलिमेंट हैव अ मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -2. हाउएवर जो पोलेनियम होता है वो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट को फेवर नहीं करता है. इंस्टेड दे आर सेइंग +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो पोलोनियम इस तरीके का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, राइट. सो आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन ओनली पोलोनियम, दैट इज ऑप्शन डी. तो जिन बच्चों ने भी ऑप्शन डी बोला था वो बिल्कुल करेक्ट है. गुड. नेक्स्ट. गिवन बिलो कंटेन cations यूजिंग इनऑर्गेनिक क्वांटिटेटिव, राइट. और आपसे पूछ रहा है अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 6. 0 to 6 ग्रुप. ये पूरा अपना सॉल्ट एनालिसिस का है, क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर. सो गिवन बिलो आर द सर्टेन cations. आपको कुछ cations गिवन है. नाउ यूजिंग दिस इनऑर्गेनिक क्वालिटेटिव एनालिसिस अरेंज देम इन इंक्रीजिंग नंबर ग्रुप नंबर फ्रॉम 0 to 6. अरेंज करो. How will you arrange? चलो मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ बेटा. इफ यू टॉक अबाउट ग्रुप 2 ना, ग्रुप 2 तो ग्रुप 2 का एलिमेंट होता है Copper+2. दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर. अगर मैं बात करूँ ग्रुप 3, तो ग्रुप 3 का एलिमेंट होता है Al+3. सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 4 की बात करूँ तो ये होता है Cobalt+2. सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 5 से बिलोंग करूँ तो Ba आता है यहाँ पे, Ba+2. एंड इफ यू टॉक अबाउट ग्रुप 6 से बिलोंग करता है Mg+2. So this is how we can arrange group 2, group 3, group 4, group 5 and group 6. Got it? So the correct order is this. कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? That is option number A. किसी का क्या आंसर आया था? PO. A. ठीक है. Right. So this is how we can actually
अरेंज। नेक्स्ट बताओ जल्दी से फटाफट, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली बता सकते हो। वी हैव NaH, we have PS3, we have GeH4, and we have LaH2.87. Now you have to tell which one is the electron precise, saline, metallic, or electron rich. So we know that now. Basically, S block elements, P block elements, right? They form the hydrides, and some D block elements also form the hydrides. So now tell me, NaH will form which type of hydride? Na belong to first group. Hmm? That is saline hydride. सबको पता है कि NaH will form NaH and group second and group first. Group first hydride and group second hydride is saline in nature. So they form saline hydride. Now what about pH3? What about pH3? तो pH3 is the electron rich hydride. We all know ना phosphorus. तो यहाँ पे 3 बॉन्ड अगर बन भी जाए उसके बाद भी इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है. So due to presence of this lone pair of electron, extra electron, they form electron rich hydride. Now what about GeH4? तो GeH4 इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज बनाएगा, बिकॉज हमेशा याद रखा करो एक चीज कॉमन, ग्रुप 14, ग्रुप 13 एंड ग्रुप 15. दिस थिंग यू नीड टू रिमेंबर. तो ग्रुप 13 हमेशा बनाते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड, ग्रुप 14 प्रिसाइज एंड ग्रुप 15 रिच. तो PS3 बिलोंग टू ग्रुप 15, तो ये रिच था. अब जर्मेनियम बिलोंग टू ग्रुप 14, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb है ना. सो दे फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. ग्रुप 13 का कोई है नहीं. सो दिस विल फॉर्म इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज. PS3 is electron rich. So this will belong metallic. So which option is correct? Tell me. Which option is correct? फटाफट सभी बताओ. Which is correct? Option D. Option D. चलो करेक्ट. चलो. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे. अब हम फटाफट अपना आज का जो GOC वाला टॉपिक है ना उसको देख लेते हैं. तो ये क्वेश्चंस और भी हैं इसमें, तुम लोग ट्राई करना और क्वेश्चंस करने का. ठीक है. अब हम लोग एक बार फटाफट से जल्दी से अपना जो GOC वाला है उसको कवर करते हैं कि GOC में हमें क्या क्या चीज कवर करनी है. चलो. राइट. ओके. सो द नेक्स्ट इज in GOC, we are going to see the IUPAC nomenclature because एक क्वेश्चन तो nomenclature से जरूर आता है. ठीक है. Always remember this thing. One question definitely comes from the IUPAC naming. So the basic rule for write the IUPAC naming is this. You need to follow this system only. First of all, you must know about the word root. कि ये word root क्या होते हैं. ठीक है. You must know about the word root. कि word root हमारे पास क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं. एंड आफ्टर दिस वर्ड रूट आपको क्या पता होना चाहिए बेटा. वर्ड रूट के बाद आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि क्या सफिक्स है क्या प्रीफिक्स है. राइट. इफ यू नो दिस 2-3 थिंग्स देन यू कैन इजिली राइट एनी IUPAC नेमिंग. राइट. लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड रूट. तो वर्ड रूट मतलब इफ द नंबर ऑफ कार्बन इज 1 देन यू कैन से मिड, 2 8 3 prop so on. Right. And what about the prefix? So we have a two type of prefix. The first one is known as primary prefix and the another one is known as secondary prefix. So primary prefix tell us whether the compound is cyclic or not. कि compound cyclic है या नहीं है. ठीक है. And the secondary prefix tell us
whether the substituents are present or not. So we need to write the name of the substituent with the locant name. Okay. So this thing you need to remember. So मान लो let us assume primary prefix tell us cyclic compound. So ये ज़्यादा important नहीं है. If the compound is cyclic, then you need to add the word cyclo. If compound is not cyclic, then you no need to write anything. Secondary prefix tell us whether they are a substitute. Substitute like if any CH3 groups are there, any fluorine groups are there, any chlorine groups are there, any bromine groups are there. So these are called substitute. Now, after the word root, we have a two types of suffix, primary and secondary suffix. So primary suffix tell us whether the compound is saturated or not. If the compound is saturated, then we need to add in. If the compound is unsaturated, means double bond or triple bond. In double bond, we need to write in. In triple bond, we need to write ein. So this thing we need to remember. Secondary suffix tell us whether we need to add the functional group or not. कि क्या हमें फंक्शनल ग्रुप को ऐड करने की जरूरत है या नहीं है. डन. कि फंक्शनल ग्रुप हमें यहाँ पे ऐड करना होगा या नहीं ऐड करना होगा. समझ गए. फॉर एग्जाम्पल मुझे जल्दी से बताओ इसका नाम क्या होगा. CH3, CH3, CH2 एंड OH. सो मान लो मुझे इसका नाम पता करना. व्हाट इज द नेम. IUPAC नेम. तो सबसे पहला चीज क्या होगा. वर्ड रूट. मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन को देखो. तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया. 1 2 3. नंबरिंग हमेशा वहां से स्टार्ट करते हैं जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगाओ. सो 1 2 3 दो पे. अब वर्ड रूट क्या हो गया. 3 मतलब प्रोप. सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन. और अल्कोहलिक ग्रुप OH लगा है तो प्रोपेनॉन. आगे क्या लगा हुआ है बेटा. 2 पे मिथाइल ग्रुप. तो दैट इज 2 मिथाइल प्रोपेनॉन. To methyl propanol. So this is how we can write the IUPAC name. अब एक क्वेश्चन आया है जल्दी से बताओ इसका IUPAC नेमिंग क्या होगा. सभी ट्राई करो. What is the IUPAC naming of this? What is the correct IUPAC naming? Anyone? बताओ जल्दी. हम्म. क्या बोल रहे हो. सी. सी बोला एक बच्चे ने. नेक्स्ट. और कोई कुछ बोलना चाहता हो. क्या होगा इसका करेक्ट IUPAC नेमिंग. सी इज इनकरेक्ट बेटा. सी के अलावा बताओ. C is incorrect. The correct naming is like this. This is a nitro compound, right? 1 2 3 4 5 and 6. This is how we can name now. So this is 4 ethyl, 4 ethyl. ठीक है. So this is 4 ethyl, 1 fluoro. 4 ethyl के बाद क्या है. 1 fluoro, 2 nitrobenzene, 2 nitrobenzene. तो क्या नाम आ गया. दैट इज 4 ethyl, 1 fluoro, 2 nitrobenzene. सो नाइट्रोबेंजीन बोलना था. तो अगर आप नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट जैसे कि 1 2 3 है ना. 1 2 3 4 5 6. देखो कितने पे जा रहा हूँ. नहीं. 1 2 3 4. तो लोकेंट को कम से कम रखना है. ठीक है. तो हमारा ये रूल हो गया. क्या नाम हो जाएगा. 4 ethyl. दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट. आप क्विकली जरा आइसोमेरिज्म को देख लो एक बार. क्या है आइसोमेरिज्म. क्योंकि ऑलरेडी आप कवर कर चुके हो तो फटाफट इसको समझ लो 2 मिनट के अंदर. आइसोमेरिज्म था क्या. क्योंकि हमने डिटेल में पहले भी पढ़ा हुआ है. सो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म वी हैव. कौन से दो टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं. द फर्स्ट वन इज अ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड द नेक्स्ट वन इज अ स्टीरियो आइसोमेरिज्म. तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंदर टोटल 4 आइसोमेरिज्म होते
चेन आइसोमेरिज्म, मतलब आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम, या चेन को ही आप चेंज कर रहे हो। जैसे 7 कार्बन की चेन है तो उसको तोड़ के आपने ब्रांचिंग बना दिया। तो इफ द सच टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म उसको क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट वी हैव पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो एक चेन आइसोमेरिज्म हो गया, दूसरा पोजीशन आइसोमेरिज्म हो गया। फिर आ जाएगा आपका फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, एंड नेक्स्ट वी हैव मेटामेरिज्म। ठीक है। सो कितने टाइप के आइसोमेरिज्म होते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म। सिमिलरली अगर मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात करूं, so we have a two different type of stereoisomerism. The first one is a geometrical isomerism एंड द नेक्स्ट वन इज द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है। तो ये आइसोमेरिज्म आपको थोड़े से याद रखने हैं। चेन वाला कब होगा, पोजीशन वाला कब होगा, फंक्शन वाला कब होगा, और मेटामेरिज्म कब देखने को मिलेगा। और स्टीरियोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल आइसोमर, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, कि डबल बॉन्ड होना चाहिए, दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए होने चाहिए। एंड द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कायरलिटी, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो दिस थिंग वी ऑलरेडी कवर, राइट? So just go through and try to solve questions from this. Okay? Now, this is very important. Electrophiles and nucleophiles. What is this electrophiles and nucleophiles? क्या होते हैं ये electrophiles and nucleophiles? तो एक बार देखते हैं फटाफट इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। क्या होते हैं ये, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। ऑलवेज रिमेंबर, सो इलेक्ट्रोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉन loving species. Okay, so they are electron loving species. Now, दूसरा second is they are also electron deficient. They are also electron deficient. And vacant orbital of just give me a second. Done. So if someone asks you what is electrophile, then what you need to say, they are electron loving species, they have electron deficient, और इसको लिविस एसिड भी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा, लिविस एसिड। व्हाई वी कॉल लिविस एसिड, बिकॉज इनके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। नाउ वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी लेवल, वैकेंट ऑर्बिटल्स ऑफ लो एनर्जी लेवल। तो वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ लो एनर्जी लेवल्स भी इनके पास होता है। नाउ इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास ना टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास। कौन कौन से 3 टाइप्स के वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं उनको देख लो एक बार। सो 3 टाइप के जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स देख लो पहले। द फर्स्ट वन इज द चार्ज, देन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड द वैकेंट ऑफ ऑर्बिटल। फॉर एग्जाम्पल, जिसपे भी तुम्हें अगर पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल जाए, वेन एवर वी हैव सम पॉजिटिव चार्ज लाइक आर पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव हो गया, Br पॉजिटिव हो गया, NO2 पॉजिटिव हो गया, NO पॉजिटिव हो गया, तो जब भी आपको पॉजिटिव चार्ज देखने को मिल जाएगा तो तुरंत बोल देना है कि ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, ये हम लोग का इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल है। ठीक है। चार्ज जब भी दिख जाए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का मतलब ही है देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो व्हेनेवर देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द species, you can say this is the electrophile. Now, what about the electron deficient? Because these are neutral, then how you can identify whether this is a electrophile or nucleophile? So, if they have a deficiency of electrons, for example, in case of AlCl3 and AlCl3 aluminum only having 6 electrons, right? So they are less than 8 electrons. In BCl3 also they are only 6 electrons. So they are electron deficient. So electron deficients are also called electrophiles. So remember this thing. Electron deficients are also called electrophile, right? Now, the next is a vacant orbital. So what about this vacant orbital? So if we talk about the vacant orbital, then this vacant orbital
like FeCl3, PCl3, PCl5, they all have a vacant orbital. So these are also called electrophile. Now, very important note here, Na plus and Cl are not the electrophile, even they have a positive charge. Why? Because they have a completely filled octet and have no vacant orbitals. तो इनका completely filled octet होता है और कोई vacant orbitals भी नहीं होता है. So we can say that कि Na plus and Cl plus are not. Is this clear to everyone? Just confirm me once. टेल मी फटाफट जल्दी से बताओ. चलो गुड. नाउ move to the next nucleophile. So it is just opposite of the electrophile. That is, they are nucleus loving. Nucleus loving. They are electron rich and they having lone pair और pi electron clouds. तो ये nucleus loving होते हैं. Lone pair of electrons होता है इनके ऊपर. Electron rich होते हैं. और भी से इनके पास lone pair of electrons होता है. Pi electron clouds. Now, very important fact. Whenever we have a charged species and the negative charge species, then you can simply say it is in a nucleophile, right? तो अगर चार्ज स्पीसीज दिख गया है तब तो आप सिंपली उसको न्यूक्लियोफाइल बोल सकते हो. पॉजिटिव दिख गया देन यू कैन सिंपली से इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल. बट द मेन कंसर्न हियर एंड मेन थिंग दैट यू नो keep in your mind in case of the neutral electrophile or nucleophile, because nucleophile are also neutral and electrophiles are also neutral. So you have to observe very carefully. In case of electrophile, neutral molecules are electron deficient. They have less than 8 electrons. So उसको हम क्या बोलेंगे? Electrophile. But in nucleophile, they having more than 8 electrons. So we can say that it is a nucleophile. For example, H2O. Right? We have H2O. So in H2O, oxygen form two bonds. How many electrons in oxygen, beta? 2, 6. 6 valence electron. So out of 6 valence electrons, 2 electrons are in bond formation. So 4 electrons are still left. कितने electrons left है? 4. 2 and 2, 4. So 4 electrons अभी भी हमारे पास left यहाँ पे होते हैं, right? तो ये H2O की बात हो गई. So these are called nucleophile because they have a extra electron, rich electron. Now, same thing when they have a pi electron cloud, right? When they have a pi electron cloud, like this in case double bond. So double bond having pi electron cloud. So in such case also they behave as a nucleophile. So we have a three types of nucleophile with us. The first one is a charged nucleophile. Another is a lone pair of nucleophiles, having lone pair also known as nucleophile. And those having the pi electron cloud is also known as nucleophile. Done? Now, let's see the different types of effects, right? Like inductive effect, we have electromagnetic effect, mesomeric effect, hyperconjugation. So these all things, these are very important. So what is this inductive effect? What do you understand by this inductive effect, right? So inductive effect basically means अगर मान लो दो atoms है, when the two atoms and there is a electronegativity difference between these two atoms. Let us assume if the Z is more electronegative than A, then they pull the electron towards itself. अपने तरफ क्या करेगा? वो electrons को pull कर लेगा. And this is due to inductive effect comes into the picture. So the polarity caused in the sigma bond है ना, तो इसमें क्या होता है? Polarity caused होता है किसमें? Sigma bond में. So polarity caused in the sigma bond due to electronegativity difference between the atoms. So this type of effect is arise when the electronegativity difference are between the atoms. Now it is also known as propagative or transmission effect. तो किस नाम से जानते हैं इसको? और propagative or transmission effect. Done. So main two three factors are, the first one is the polarity caused in sigma bond is known as inductive effect. And the next one is due to the electronegativity difference it arises. किससे arise होता है? Electronegativity difference से arise होता है. And it is also known as the propagative or the transmission effect, right? Now, this is a permanent effect. This thing also you need to remember. This is a permanent effect and weakest effect, we can say. Weakest effect, how we can say that it is a weakest effect? Because at the distance increase means it work only up to the 3/4 carbon only. For example, मान लो यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, तो दिस इज इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा.
सो दिस इज पॉजिटिव, इस तक इफेक्ट रहेगा, इस तक रहेगा, इस तक रहेगा मैक्स, फिर धीरे धीरे इफेक्ट क्या हो जाएगा, इसका कम हो जाएगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट इज द वीकेस्ट इफेक्ट एंड इट इज सिग्निफिकेंट टिल थर्ड और फोर्थ कार्बन ओनली। सो वी कैन से दैट ना कि इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। राइट, किसके प्रोपोर्शनल होता है, डिस्टेंस के, कि एज द डिस्टेंस इंक्रीज इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट डिक्रीजिंग। ठीक है, तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। सो दिस थिंग यू नीड टू रिमेम्बर। डन। नेक्स्ट वी हैव हाइपर कॉन्जुगेशन, कि भाई ये हाइपर कॉन्जुगेशन की क्या कहानी है। हम्म, देखो, सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल ओवरलैप विद द पी ऑर्बिटल। जो सिग्मा बॉन्ड के ऑर्बिटल्स होते हैं वो किसके साथ ओवरलैप होते हैं, पी ऑर्बिटल्स के साथ। और यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग होती है बेटा, sp3p ओवरलैपिंग। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी कोई हाइपर कॉन्जुगेशन बोले तो हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, जबकि रेजोनेंस का मतलब क्या होता था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये दो चीजें याद रखनी है, एक में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड होता है और एक में डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड होता है। तो सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल ओवरलैप विद द पी ऑर्बिटल और sp3p ओवरलैपिंग होती है। नाउ इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर हियर, कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, राइट, मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उतनी ही ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, यानी मोर द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मोर द हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर एंड मोर विल बी द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, और उतना ही ज्यादा हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी देखने को मिलता है। तो ये चीज आपको अच्छे से दिमाग में फिक्स कर लेनी है कि मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच, मोर द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर एंड मोर विल बी द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। नाउ हाइपर कंजुगेशन इज आल्सो ऑब्जर्व इन द कार्बोकेटाइन। हाइपर कंजुगेशन कहाँ देखा जाता है, कार्बोकेटाइन। इनफैक्ट जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, वी ऑल नो ना, आउट ऑफ 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, which कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, 3 डिग्री। तो why 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो इट इज ड्यू टू द हाइपर कंजुगेटेड। ठीक है, because 3 degree carbocation having more hyperconjugative structure, that's why they are more stable, or we say they have a more number of alpha hydrogen. So if the alpha hydrogen, if the number of alpha hydrogen increase, then the hyperconjugation effect also increase and stability of the carbocation also increases. Let us consider an example. So here we have one carbon and sp3 atom, sp3 atom, and this is hydrogen. So this is a alpha carbon. So alpha carbon having one sp3, another sp3. So if the number of alpha hydrogen is more, then stability is also increases. Got it? Now, what about mesomeric effect and resonance effect? So basically the displacement of electron molecule via the resonance. Resonance में जब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, that is called रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो कोई भी पूछे आपसे रेजोनेंस इफेक्ट क्या है या मेसोमेरिक इफेक्ट क्या है, तो आप इस तरीके से उसको समझा सकते हो कि मेसोमेरिक और रेजोनेंस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मॉलिक्यूल वाया रेजोनेंस। सो मेसोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस इफेक्ट को ध्यान से देखो, प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट हो गया, माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट हो गया। सो दीज आर द मेन थिंग। अब देखो, प्लस एम इफेक्ट और प्लस आर इफेक्ट देखने को कब मिलता है, सो वेन एवर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक ओ एच, ओ सी एच थ्री, और वी से NH2। ठीक है, so whenever such type of group CH3, so whenever the such type of group is attached to the benzene ring, they will show plus M or plus R effect, right? That is electron donating group. तो जब भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगते हैं तो हमें कौन सा इफेक्ट देखने को मिलता है, प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट देखने को मिलता है। सिमिलर माइनस माइनस आर इफेक्ट देखने को कब मिलेगा बेटा, जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगेंगे, जैसे कि क्लोरीन हो गया, जैसे कि CHO हो गया, जैसे कि COOH हो गया, जैसे कि NO2 हो गया। सो दीज ऑल आर शो माइनस एम और माइनस आर इफेक्ट, right? So whenever the electron donating group are present, they will show plus R effect, and whenever the electron withdrawing group are present, they will show minus R effect. ठीक है, now let's see. So it donate electron to the carbon chain. An attached atom has at least one lone pair or extended conjugation with the pi bond. So let's understand with an example. एक example से समझते हैं फिनॉल के केस में। So फिनॉल क्या है, फिनॉल है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फिनॉल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो होता है हम लोगों का, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है।
तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ये फिनॉल है, तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया, तो रेजोनेंस के थ्रू ये आगे शिफ्ट हुआ, फिर ये चला जाएगा आगे। तो ऐसे अगर आप देखो तो इसके हर ऑर्थो और पैरा पे, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, दिस इज कॉल्ड पैरा पोजीशन, एंड दिस इज अगेन ऑर्थो पोजीशन। तो इसके हर ऑर्थो और पैरा पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। तो हर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। तो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन बढ़ने के चलते ये इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां बढ़ जाती है। इसीलिए जो फिनॉल रिएक्शन करता है ना इलेक्ट्रोफिलिक, वो रिएक्शन कहाँ करेगा, सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे। So whenever you ask, whenever the electron donating group is attached to the benzene ring, they increase the electron density at ortho and para position. तो ortho और para पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देने के चलते ही ये जितने भी फिनॉल हो गया, एनिलीन हो गया, एनिसोल हो गया, दे ऑल आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर है? Similarly, when the electron withdrawing group is attached to the benzene ring, they decrease the electron density at ortho and para position. मान लो हमने NO2 ग्रुप लगा दिया, तो NO2 ग्रुप क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। नाउ व्हेन द इलेक्ट्रोफाइल कम, अब इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो कहाँ अटैक करेगा, तो ऑब्वियसली बेटा वो कहाँ अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल वहां अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। तो ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है, तो कहाँ अटैच करेगा, मेटा पे। इसीलिए जब भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं, सो वी हैव अ मेटा प्रोडक्ट, एंड व्हेनेवर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट, वी हैव अ ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जस्ट कंफर्म मी वंस। डन, जल्दी बताओ एक बार। देखो, so these are some examples of plus M और plus R effect group and these are the examples of minus R effect group। ठीक है, so इसको एक बार याद जरूर करना आप लोग कि किस तरीके से आप इसको लर्न कर सकते हो और याद रख सकते हो कि what are the plus M effect group, what are the minus M effect group। ठीक है, देखो भाई, एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, जल्दी से बताओ। चार्ज कार्बन एटम स्टेबलाइज द कार्बोकटाइन ड्यू टू एवरीवन। Methyl group attached to a positively charged carbon atom stabilize the carbocation due to। ये कह रहा है कि मान लो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे अगर आपने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया, मान लो ये मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो क्या होगा यहाँ पे, क्या बताया था मैंने, अल्फा कार्बन पे CH3 ग्रुप लग जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन बढ़ जाएगा। तो क्या था वो, कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही थी, गिव मी। तो वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, हाइपर कंजुगेशन है ना, तो हाइपर कंजुगेशन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताओ। बताओ भाई क्या होगा इसका। बोला है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थ्री आइसोमेरिक पेंटेन आर एज अ फॉलो, एन पेंटेन का ज्यादा है, फिर आइसोपेंटेन, फिर न्यू पेंटेन। तो हम सबको पता है ना कि एज द ब्रांचिंग इंक्रीज बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज,
तो when the branching increase, the molecule attains shape where the result in the smaller surface area है ना, due to the intermolecular forces and lowering the boiling point. तो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ही करेक्ट है. तो क्या हो जाएगा? बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट. तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है. लास्ट क्वेश्चन एक और बताओ. दो टर्सरी कार्बन है इसके अंदर. इसका आईयूपीएसी नेमिंग बताना है. जल्दी. ये मैं तुम लोगों को ऐसा होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये करना है तुम लोगों को, कैसे भी दिमाग लगाना. C6H14 से बनाना है और दो टर्सरी कार्बन होने चाहिए इसके अंदर. और सोच के बताना क्या होगा इसमें. ठीक है. ये खुद ट्राई करना है सबको. फिर मैं आंसर कल पूछूंगा तुमसे. ये बता दो. विच अमंग द फॉलोइंग कंपार्टमेंट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कौन करेगा? उसके लिए कहानी थी ना. डबल बॉन्ड होना चाहिए. दो अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए होने चाहिए. बताओ. जल्दी बताओ भाई. फटाफट. बताओ भाई क्या होगा. किसी का भी आंसर आया? डी. वेरी गुड साई चरण. गुड. दैट इज 3,4 डाइमिथाइल हेक्सोनिन. ठीक है. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. तो मैं ना आप लोगों के साथ ये पीपीटी मैं एक बार दोबारा पूछता हूँ कि भाई आपके साथ अभी तक शेयर क्यों नहीं हुआ. तो इसको दोबारा शेयर करते हैं आपके साथ एक साथ. सारे क्वेश्चंस ट्राई करना सॉल्व करने का. ठीक है. तो हमने जियो से किया और इसके कुछ क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में भी सॉल्व करेंगे. ठीक है. कोई डाउट हो तो पूछो. ठीक है. सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग है ना. मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, वहां फिर आगे डिस्कस करेंगे. थैंक यू ऑल. Sir, where you are sharing the PDFs? Yes, I already shared, but I don't know why you want to receive. I'll talk to the, concerned person. So by today evening, you'll get the PPT for all the chapters, right? So from where I have to calculate them? Oh, they share some link with you guys. They share some links and they contain all the PPT. In Avanti website, Yeah, from the website Enable portal. enable. Okay, sir. Okay, thank you all.